जी, तो आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं, वो फ़रवरी मार्च का पेपर स्टार्ट करने लगे हैं 2022 का। और ये वो सेम फॉर्मेट पे है जिस पेपर फॉर्मेट पे आप लोग जो है पेपर अटेम्प्ट करेंगे। 1 आवर 15 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन होगी। और इन पेपर में देख लीजिए, आपके पास कोई सेक्शन बी नहीं होगा, ठीक है? आपके पास पूरे जो है सारे इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और अगर आप इसमें देखें तो अराउंड क्वेश्चन नंबर 26 से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये टिल 40 क्वेश्चन तक, तो 15 एमसीक्यूज आपके कंप्लीटली ऑर्गेनिक से आ, बनेंगे। नहीं, ये स्पेसिमेन नहीं है, ये फरवरी मार्च 2022 का है। इसके बाद मैं स्पेसिमेन करवाऊंगा आपको सबसे आखिर में। और इन पेपर्स के एंड में आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन होगी और एंड में पीरियोडिक टेबल भी गिवन होगा, क्योंकि अब डाटा बुकलेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी और जब इंफ्रारेड का क्वेश्चन होगा तो वहां पे उसके साथ इंफ्रारेड टेबल भी प्रेजेंट है। जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम के is 418 kilojoule per mole. Okay. The first ionization energy of strontium is 548 kilojoule per mole. तो हमें दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जीज इन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। Which statement helps to explain why strontium has a first ionization energy higher than that of potassium? Uh, अच्छा, आपको अभी पीडीएफ चाहिए? ओके, लेट मी सी। मैं अभी एक मिनट दें, मैं ग्रुप में जरा भेजता हूँ, रुक जाएं। इसका सॉफ्ट कॉपी आयशा ने, देखें, एक लिंक शेयर किया था। मैं उस लिंक को दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है? उसमें जो है आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी उस गूगल ड्राइव में प्रेजेंट है, तो वहां से आप लोग निकाल सकते हैं। मैंने अभी सेंड कर दिया है। चेक कर लें इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, if we talk about the charge on strontium nucleus is greater than the charge of potassium nucleus, is this statement is correct? And for that we have to look at the periodic table. तो अगर हम periodic table देखें तो पोटेशियम का न्यूक्लियन नंबर, सॉरी, प्रोटॉन नंबर्स 19 है, न्यूक्लियस चार्ज 19 है और इसका 38 है। तो ये बात सही लग रही है, ठीक है? दोनों क्योंकि डिफरेंट पीरियड में, हम सेम पीरियड में बात नहीं कर रहे, तो न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है, ठीक है? इस वजह से ये करेक्ट हो सकता है। बट अगेन वही बात है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको जस्टिफाई करना है और आपको क्लियरली चेक करना है कि दूसरे ऑप्शंस रॉन्ग हैं या नहीं। ओके, so the outer electron in strontium atom experiences greater shielding than the outer electron in a potassium atom. ये बात सही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि पोटेशियम का पीरियड 4 है, ठीक है?
और स्ट्रॉन्शियम का पीरियड, स्ट्रॉन्शियम पीरियड 5 में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। बट अगर ये बात वैसे तो सही है, बट ये अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है, क्योंकि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी को लोअर होना चाहिए, मगर आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है तो हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कंसीडर करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। द आउटर इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंसेस स्पिन पेयर रिपल्जन। अच्छा, ये बात करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर स्पिन पेयर रिपल्जन एक्सपीरियंस करता तो स्ट्रोंशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, पोटेशियम से, बट ज्यादा है, तो इसीलिए सी भी रॉन्ग है, ठीक है। द आउटर इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रोंशियम एटम इज फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द आउटर इलेक्ट्रॉन इन अ पोटेशियम एटम। yes it's true, but it is not again explaining the ionization energy, ठीक है। उनके लिए ये लॉजिकल रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दूर है तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज होना चाहिए, बट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने का रीजन ये है कि इसका न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होने की वजह से स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, तो सो वी नीड अ मोर एनर्जी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। what is the electronic configuration of Mg2 positive ion? Okay, so if we talk about Mg is 12, and if it's a 2 positive, which indicates it have a 10 electrons, right? Because it have a 2 electrons lesser. So its electronic configuration will be 1s2, 2s2, and 2p6. So if we look, we can go for a and all are incorrect. So A is our correct answer. Yes, Hassan and Tisha, very good. जी ये पॉइंट क्लियर है सबको? Okay, now question number 3. Compound X contains the element carbon, hydrogen, and oxygen only. Okay. 2 grams of X produces 4 gram carbon dioxide, 1.63 gram water when complete combusted. What is the empirical formula of X? Okay, so if we work on this, that they are saying that there is a CXHYOZ, because we don't know the formula, and its mass is 2.00 gram. And on complete combustion, they are giving us carbon dioxide 4.0 gram and water 1.63 gram. And you have to identify the its empirical formula. Okay, so let's see how you will do it. ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा इसका मेथड होगा, मगर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। हमें पता है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में 44 होता है मास, और उसमें कार्बन कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये बात, कार्बन का मास उसमें 12 होता है। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये 2 ग्राम्स होगा तो कार्बन का मास कितना होगा? एक्स, ठीक है।
तो जरा एक्स की वैल्यू निकालिए क्या आ रही है, और कोई मुझे बता दे आंसर जल्दी से क्या आ रहा है। और इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन निकालना चाहें, क्योंकि वाटर जो फॉर्म हुआ है उसमें सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के गए, ठीक है। ओके 0.5, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.5। ओके 0.55 एंड समवन इज सेइंग 0.54। मैं 0.55 ले लेता हूँ, ठीक है। कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे? वाटर का मास 18 होता है और उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। तो अगर वाटर 1.63 ग्राम्स होगा तो ये कितने होंगे? एक्स। तो जरा हाइड्रोजन की अमाउंट काउंट करके बताइए क्या आ रही है। ओके 0.54 ज्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो पॉइंट आप लोगों ने राउंड ऑफ किया ही नहीं किया। 4 के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जी हाइड्रोजन की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। 0.18। ओके तो ये हमें मास मिल गया। अब हम ऑक्सीजन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम सारी वर्किंग किसके लिए कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कर रहे हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होगा? टोटल मास कितना था? 2 ग्राम्स था। सो 2 माइनस 0.55 एंड माइनस 0.18 will give us the mass of oxygen present in the compound. 2 ग्राम कब लिया हमने? 12 ग्राम लिया, और 2 ग्राम तो हमें इस पूरे एक्स का मास दिया हुआ है ना। तो हम 2 ग्राम में से 0.55 कार्बन था और 0.18 हाइड्रोजन था, उनको माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। ओके अच्छा, ओके माय मिस्टेक। ठीक है, ये देखिए ये 4 ग्राम यूज हुआ है। आप लोगों ने 4 ग्राम से कैलकुलेशन करके मुझे बताई थी। अगर 4 ग्राम यूज हुआ है तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.10 आई सपोज। तो यहाँ पे आप 1.10 से माइनस करेंगे। ये जरा चेक कर लीजिए प्लीज। ये मैंने जल्दी में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन का मास ले लिया। ओके 1.01 आ रहा है। सो 1.01 माइनस कर लें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। 1.01 या 1.09? दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। ओके इट्स 1.09। तो वो 1.1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1.09 एंड 1.09, तो बताइए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे माइनस करके बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है। 0.73। तो ये हमें ऑक्सीजन का मास मिल गया। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन इज 1.09, हाइड्रोजन इज 0.18 एंड ऑक्सीजन इज 0.73। ए आर से इनके डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 16। आंसर बताइए। यहाँ पे तो 0.18 ही आएगा। बाकी दोनों केसेस में बताइए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। यस, कार्बन और ऑक्सीजन के मोल्स बताइए जल्दी से प्लीज। कार्बन इज 0.09 एंड ऑक्सीजन इज 0.0456। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से डिवाइड कर दें 0.0456।
क्या फॉर्मूला आ रहा है? आई थिंक आपकी वैल्यू आएगी 1, नो सॉरी नॉट 1, 2:4 4:1, तो इट मीन C2H4O, तो इट इंडिकेट सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच मॉलिक्यूल इज द डाइपोल मोमेंट जीरो? तो डाइपोल मोमेंट जीरो किस मॉलिक्यूल में होती है? जिस मॉलिक्यूल में हमारे पास अ, सारे एंड्स पे एक ही चार्ज होता है। तो ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पे CCl4, तो ये CCl4 का केस होगा, ये डी करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं CCl4 को ड्रॉ करूं तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में मेरे पास चारों तरफ क्लोरीन होगा। ठीक है, जिसका मतलब है ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और सारे एंड्स जो हैं पार्शियल नेगेटिव होंगे, और सारे एंड्स पार्शियल नेगेटिव होने की वजह से इस मॉलिक्यूल में कोई नेट डाइपोल नहीं होगी। सो क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 4, डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है सबको? ओके, गुड। विच डॉट एंड कॉन्ट्रास्ट डायग्राम इज करेक्ट फॉर Al2Cl6? देखें, डाइपोल ताहा उस मॉलिक्यूल में होती है जिस मॉलिक्यूल के अगर दो एंड्स हों तो एक एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए और एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आए। और इन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट जीरो है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट जीरो होने का मतलब क्या है? नॉन पोलर, वो मॉलिक्यूल जिसमें कोई दो डाइपोल ना हो। तो वो हमारे पास यही केस है, क्योंकि इस केस में चारों तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और मॉलिक्यूल का कोई भी फेस या कोई भी एंड जो है पार्शियल पॉजिटिव नहीं हो रहा। जी, अब क्लियर हुआ था आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, ए पार्ट को देखें तो Al2Cl6 के लिए बात की जाए तो हमें पता है कि इसमें हमने डेटिव में पढ़ा भी है, इसकी एग्जाम्पल पढ़ी है कि इट्स अ डेटिव बॉन्ड, इसमें डेटिव बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ए रॉन्ग हो जाएगा, आयनिक है। ठीक है, अब आपके पास क्या बचे? B, C एंड D। मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। अच्छा, अब डी रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि Al Cl3 के दो यूनिट्स कंबाइन होते हैं, तो दो एल्युमिनियम कभी भी आपस में कंबाइन नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो अब आपके पास बचे बी और सी। अब बी और सी में आप देखें तो सी में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो इसकी वजह से सी भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक डेटिव बॉन्ड होता है। यहाँ पे देखिए ये तीन कोवलेंट बॉन्ड हैं और ये एक डेटिव बॉन्ड है, तो वन डेटिव होने की वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? भाई Al2Cl6 के स्ट्रक्चर में डेटिव बॉन्ड होता है। ठीक है, और डेटिव बॉन्ड होने की वजह से डेटिव बॉन्ड, दो एल्युमिनियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। आप नोट्स में देखिए, आपके पास ये एग्जाम्पल प्रेजेंट है। ठीक है, तो बाकी पहला तो इसलिए रॉन्ग हो गया, आयनिक था। बाकी तीनों में किसी में भी क्लोरीन, यहाँ पे देखें की दी हुई है कि क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्किल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में इसके अलावा इन दोनों में से बी और सॉरी सी और डी पार्ट में किसी भी मॉलिक्यूल में क्लोरीन डेटिव बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो इसीलिए वो रॉन्ग कंसिडर किए जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल तो आप लोगों को बॉन्डिंग में प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? जी, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।
जी सबको क्लियर है ना? Okay, question number 6. The boiling point of hydrogen halides are shown. Okay, so the boiling point of HCl is 188 Kelvin, HBr is 206 Kelvin, and HI is 238 Kelvin. What is the explanation for the trend in boiling point for the hydrogen halides from HCl to HI? Okay, so it's all about these are the covalent molecules. So these are the boiling point depends upon the intermolecular forces in this case. The bond energies of hydrogen halides increases from HCl to HI. No, it's wrong. From HCl to HI, the bond energy decreases, and even there is a no dependency of a boiling point on the bond energy, so it goes wrong. There is an increase in the strength of intermolecular forces of attraction from HCl to HI. Yes, this statement is correct, but first we make sure that C and D are wrong. The intermolecular force, the intermolecular hydrogen bond becomes stronger from HCl to HI. Wrong, because there are intermolecular forces over here, but that are not hydrogen bonds. Now D, there is an increase in the bond polarity of HCl to HI. No, it is also wrong, because the electronegativity decreases down the group, hence the bond polarity actually decreases. Increases, there is an increase is wrong, there is a decrease in the bond polarity from HCl to HI. This statement is correct, but all, even it's correct, it does not explain why there is a increase in the boiling point. It is only due to the strength of the intermolecular forces. Is this understandable to everyone? जी क्लियर है यहाँ तक सबको? Okay, question number 7. Element XYZ or all in first two periods of the periodic table. Okay, remind me in the end of the class, Ibrahim. I will try to explain again. Their Pauling electronegativity values, En values are shown. X has the electronegativity of 1.0, Y have the electronegativity of 2.1, and Z have the electronegativity of 4.0. Substances exist with the formula Xz, Yz, and Z2. Which law puts these substances in order of increasing melting point? Okay, if we try to figure out Z square, oh sorry, Z2. If we talk about Z2, the difference in the electronegativity is 0. So it means its melting point is lowest or low. Why? Because if it's a Z is Z2, so it means there are two Z atoms of a same element, which means no dipole, and there is a no, if there is a no dipole, so the intermolecular forces between the Z2 molecules are induced dipole or temporary dipole, which are the weakest one. Is this understandable to everyone? Now, if we talk about YZ, the electronegativity difference, YZ, Z is 4.0 and Y is 2.1, so it will be 1.9. Okay, so its electronegativity is higher, which means its melting point is moderate right now. I'm not sure, but if I look at XZ, the difference of electronegativity is 3.0, 4 minus 1. So it means it have a highest melting point. So XZ have a highest melting point, and XZ is over here in C option. So A, B, and D goes wrong, and we are left with the C. So our C option is the correct answer. Yes, very good, Tisha. Is it clear to everyone? Okay. Now, question number 8.
the equation for the reaction 1 is shown. And if you see that a glucose molecule is converting into carbon dioxide and ethanol. And if you recall this reaction, you have studied it in your O levels and IGCSE as well. It is a fermentation. And now they have given you the enthalpy change of combustion of glucose. See, it's written delta H not C. It means it's the enthalpy change of combustion of glucose is A. Yes, wait, Halima. And the enthalpy change of combustion of ethanol is B. What is the correct expression for the enthalpy change of a reaction 1? Okay. So if I'll try to make a Hess cycle over here, the enthalpy change of this reaction, let me represent it by 1, and I have to identify, giving me 2 moles of carbon dioxide and this thing. Now, when I combust a glucose, I will get a carbon dioxide and water. And when I will combust this, again, I will going to get a carbon dioxide and water. Okay, Hamna and Tisha, let me see. So I will represent it by A. Okay, okay, Hassan. And I will represent it by 2B. And if I look at cycle, what I will conclude that A is equals to 1 plus 2B, and then 1 is equals to A minus 2B. So, yes, very good, Tisha, Hamna, and Hassan. D is our correct answer because we are getting A minus 2B. जी सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, is it clear to everyone? Okay. Now question number 9. Nitrogen monoxide is an atmospheric pollutant that is formed inside car engines by an endothermic reaction between nitrogen and oxygen. Okay. They have told us that the enthalpy change of this reaction is endothermic, right? And if it's endothermic, then it indicates that the energy of the product is higher than the energy of the reactant. Is it understandable to everyone? Okay, Tisha, your answer seems fine. Let me check. So if we look at C and D, we have a products at lower energy, right? Which makes C and D wrong. ठीक है, ये बात यहाँ तक clear है? And if we look at A and B, the product have a higher energies than the reactants. But if you look over here, the direction of the enthalpy change is wrong in B, which makes the B wrong as well. So A is our correct answer. Is it clear? Yes, Tisha, Iman, and Hassan. Very good. जी यहाँ तक clear है सबको? Now question number 10. There are two half equations. One is when MnO2 is undergoing reduction and becoming MnO4, sorry, magnate ion is undergoing. I can call this one reduction and I call this one oxidation, because here there is a gain of electron because electrons are on the reactant side, and here there is a loss of electron. The equation for the reaction between magnate 7 ions and sulfite ions is shown, and now they have given you the net equation as well. Which statement is correct? They are saying that W is equals to X is equals to Z. Here I have a W, X, and Z. So I have to figure it out. Let's see how I will do. What I will do, there are 3 electrons over here and 2 electrons over here. So I multiply this equation whole by 2 and this whole equation by 3. ये बात समझ में आ रही है सबको?
अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम्स 2 करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर 4 तो हो जाएंगे मगर, और यहाँ पे वाटर कितने हो जाएंगे? 3। तो नेट इक्वेशन में यहाँ पे वाटर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 4 - 3 हमें 1 मिलेगा, क्योंकि एक के वाटर रिएक्टेंट साइड पर है और एक के प्रोडक्ट साइड पर है, तो वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? तो वाटर की वैल्यू 1 हो गई। नाउ डब्ल्यू, डब्ल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डब्ल्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और ऊपर 2 हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो 2 को जब मैं टाइम्स हाइड्रोक्साइड को टाइम्स 2 करूंगा तो मुझे कितने हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे? 8 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे? 3 × 2 = 6। तो दोनों अपोजिट साइड पर हैं, तो 8 - 6 मुझे क्या मिलेंगे? 2। तो ये भी 2 हो गया। तो देखें, U भी 2 है, X भी 2 है, U भी 2 है और Z भी 2 है, तो तीनों 2 आ रहे हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? मैंगनीज इज रिड्यूस टू ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो प्रोडक्ट में जो मैंगनीज फॉर्म हुआ है MnO2, अगर आप उस पर वर्कआउट करें तो यू विल फाइंड देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, दैट्स इज 2 - times 2, which makes it, and the whole charge is 0, so it means Mn have a 4+ charge. So second statement is also correct. Okay, one, let me see. Sulfur is oxidized from +4 to +6. Okay, so let's have a look. We have a sulfite. Sulfur is in the form of sulfite converting into a sulfate. So if we will work over here, it is -2 times 3 makes it -6. The net charge is -2, which means sulfur is +4. So this point is right. And here again the overall charge is -2, and there are 4 oxygen. So -2 times 4 makes it -8. And here I have plus, that means I have a +6. Yes, so third statement is also correct. Okay, very good, Iman and Hassan. So our A option is correct, that all 1, 2 and 3 statements are correct. जी, सबको क्लियर है ये एमसीक्यू? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। Hydrogen peroxide H2O2 decomposes to form water and oxygen. The reaction is catalyzed by bromide ions. Okay, which row is correct? Okay, if bromide ions are the catalyst, you see that your reactant is in aqueous state, and bromide ions are also in aqueous state. It means that the catalyst is a homogeneous catalysis, not a heterogeneous catalysis. So we mark A and B wrong because the catalyst is homogeneous. ये पॉइंट क्लियर है सबको? ताहा, मैं आपकी बात पे आता हूँ, 1 मिनट मुझे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेने दें, उसके बाद देखें। homogeneous catalyst is the one which have a same state as the reactant. Our reactant is in the equation, if you see, it's in aqueous state, and they said that bromide ions are the catalyst and they are in the aqueous state as well. Yes, because they must have the same phase, they looks like same, they are in the liquid form. So whether it's a liquid or aqueous, they are considered as a same phase. Is it clear, Hamna and Noor? So that's why we consider it as a homogeneous catalysis. Okay, so now we have to decide,
Bromide is converting into bromine, and when it converts into bromine, its oxidation number changes from -1 to 0, which means that what happens to bromide? That bromide ions oxidized or reduced? Yes, if bromide ion is converting into a bromine, its oxidation number is changes from -1 to 0, so it means it oxidizes, right? So it means on the basis of that, here they said in the D option bromide ions are reduced, so we mark it wrong, and C is our correct answer. जी, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? Okay, very good. Taha, your question is that oxidation of sulfur, why did we take 2 instead of 0? So see, we can take the oxidation state of sulfur as a 0 when it's a sulfur, when it's an element, but here it's a ion and a polyatomic ion, where in the equation they have written the net charge, that is 2 minus and 2 minus. That's why we have put the -2 charge after is equals to. Yes, Tish, Iman, because bromide ions are reacting in the first step only, in the first equation only. In the second equation, there are no bromide ions in the reactant. The bromide ions re are getting restored in the second equation because they are catalyst. Eh, So in the if we look at the second equation, that the bromide ions are the product. So if they are the product, we cannot tell their behavior any further, that how they are reacting, but here they are as a reactant in the step 1, so that's why we considered it in the step 1 only. Okay, now question number 12. Hydrogen and iodine react to form hydrogen iodide in an exothermic reaction. The equation is shown. Okay, 1 meter cube reaction vessel contains hydrogen iodine and hydrogen iodide gases at equilibrium. The temperature is changed such that the total pressure is in the 1 meter uh, cube vessel doubles. What is the effect on Kp on the position of equilibrium? Okay, now this equation, the reaction is exothermic in the forward direction. Okay, so if I increase the temperature, what will happen? Where will the equilibrium position shifts? Increase in reaction temperature favors endothermic reaction. So basically, it means that the backward reaction is endothermic. So it means that the equilibrium position moves to the left due to increasing the temperature. ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, very good, Hassan. So it means in terms of equilibrium position, ये दोनों correct हैं और ये दोनों wrong हैं. तो उस बेसिस पे मैं डी और बी को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दूंगा. ठीक है. अब अगर टेम्परेचर डिक्री इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है, तो केपी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? केपी की वैल्यू सेम रहेगी या डिक्रीज होगी? यस, वेरी गुड हमना. Yes, so increase in temperature, what will happen here? Equilibrium shifts to left, which means, yes, Iman, you are correct, very good.
विच मीन्स केपी वैल्यू डिक्रीजेस, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो जाएंगी और डिनोमिनेटर की जो है ज्यादा हो जाएंगी। तो नो चेंज वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया और वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ए। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। देखें, इसके लिए ना आपके पास एक समरी है, जो मैंने एक समरी करवाई थी। एक मिनट, इधर नहीं, इधर ही रुक जाए। इक्विलिब्रिया के नोट्स किसी को दिखाई दें तो बताइएगा। रिडॉक्स, नाइट्रोजन, सल्फर, A2 equilibria, where is AS equilibria? Here you we go। ये देखें, ये एक छोटी सी ना यहाँ पे समरी है। जी, ये सबको समझ में आ रही है समरी, ये रूल है। और यहाँ पे एक बात और साथ ऐड कर लीजिए कि सेम फॉर केपी। चाहे तो हैंड आउट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो केसी और केपी सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होते हैं। आप कंसंट्रेशन को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, इनसे केसी और केपी पे कोई चेंज नहीं आता। केसी और केपी की वैल्यूज टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज होती हैं और इस तरह चेंज होती हैं। जी, तीशा और हलीमा क्लियर है आप दोनों को? यहाँ पे एक ये यस हलीमा। ओके, सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। डाइइथाइल जिंक is added to sodium hydroxide, two reactions occur. Okay, reaction in, if you look at in reaction one, it's with the water and we will getting a zinc oxide and 2 moles of ethane। हसन, ये नोट सारे ग्रुप में भेजे हुए हैं। These all notes are there in the group। Reaction 2, when water reacts with zinc oxide in with alkali, zinc hydroxide, zinc OH4, 2 negatives, and zinc hydroxide ion is forming. In which reaction, in these reaction, which compound act as a Bronsted-Lowry acid? जी, कौन आंसर बताएगा? Tisha, your answer is wrong। Bronsted-Lowry acid is the one which is hydrogen ion or a proton donor। Yes, Hamna, very good। So if you look at in the equation one, it is a Bronsted-Lowry acid because it loses its both of hydrogen and just join with the oxygen with the zinc over here। हाइड्रोजन दोनों लूज कर दिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये है। और अगर आप सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन में भी आपके पास ये वाटर है, क्योंकि वाटर जो है हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, विच मींस इट इज आल्सो लूजिंग अ हाइड्रोजन आयन। सो in either reaction 1 and in reaction 2, water is acting as a Bronsted-Lowry acid। So B is the correct answer। Very good, हमना। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 14।
empirical formula, right? Then 1 mole of any substance contains 6.02 exponent 23 atoms. Is this statement correct? No, it's wrong because they are asking about the substance. So substance can be a molecule, and if it's a molecule, then there must be 6.02 exponent 23 molecules in it. And if it's a atom, then it is only correct. But they said that's a substance. So it is not necessary that if it's a substance, so it can be a compound as well. And if it's a compound, so it doesn't have a 6.02 exponent 23 atoms, but more than that atoms. So second statement also goes wrong. Now the third statement, the relative atomic mass AR of an element is the ratio of the average mass of one atom of the element to the mass of an atom of carbon 12. Yes, is this the statement is correct? The relative atomic mass of an element is not the ratio, is the average mass. So C also goes wrong. So we left with the D option only. So D is our correct answer. Now let's move to question number 15. The Boltzmann distribution for 1 mole of gas at a temperature T is shown. 1 mole of a same gas is added and the gas remains at temperature T. Which dotted curve shows the distribution with the added gas? Okay. Same on the same temperature, the moles of the gas get doubled. So what will happen to the curve? Okay, Tisha and Iman. Yes, you both are correct because if at the same temperature we get the mass of moles of the gas doubled, yes, Taha, good. So the most probable energy remains the same, which is only in the A, and all have a different curves, which makes B, C, and D wrong. So A is our correct answer. Yes, the distribution of the energy won't change because we are not changing the temperature. Now, question number 16. In the reaction shown, the concentration of both X and Y are reduced to half of their original values whilst keeping the volume of the solution constant. Simultaneously, the temperature is increased from 298 Kelvin to 348 Kelvin. So what they did, they decreases the concentration of X and the concentration of Y to the half, and they raises the temperature. Which prediction is definitely true? It means which prediction is for sure true. So a smaller proportion of collisions between particle X and particle Y will be successful. Is this is definitely a true statement? No, because decrease in temperature will decrease the proportion of the collisions, but at the same time we are increasing the temperature, which will increasing the success free proportion of the successful collisions. So this makes A wrong. So we are not sure whether A can be correct and not. So we mark A wrong. Okay, Tisha, let me see. The average kinetic energy of the particle X and Y will increase if we decrease the concentration, the average kinetic energy remains same, but increasing the temperature, yes, the average kinetic energy of the particles X and Y will increase. So it is correct, but first we will mark C and D wrong. The rate of reaction will be unaffected. No, it's wrong.
because the concentration are decreasing and the temperature is increasing. So there must be change in the there must be some change in the rate of reaction. The frequency of the collision between particles X and particles Y will halve. No, we are not sure because the concentration are decreasing and the temperature is increasing. So it cannot be half. That is for sure. But we are not sure whether it will increase or decrease related relative to the initial one. So we are not sure. So we are left with the only B option. So our B option is correct. Is this understandable to everyone? जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। जी भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? Okay, question number 17. A student investigated the chloride of a period 3 element. This is what the student wrote down as a record. The compound was a white crystalline solid. It dissolved easily in water to give a solution of pH 12. When placed in a test tube heated in a roaring Bunsen flame, the compound melted after several minutes of heating. What can be deduced from this record? Okay. At least one of the recorded observation is incorrect. So we are unsure. If we are unsure, let's read the remaining things. The compound was magnesium chloride. So if you recall, magnesium chloride is acidic. Its pH is around 6.5. And here they said its pH is 12. And it is easily soluble. So it means this statement goes wrong. ये बात सबको समझ में आ रही है? The compound was phosphorus pentachloride, and if it was phosphorus pentachloride, then we will get a pH around 1 to 2. So C statement also goes wrong because if we dissolve it in water, the compound was sodium chloride. No, it is also wrong, Tisha. Why? Because its pH is also 7 because it's not an alkali. So BCD went wrong, which means that our A statement is correct, that there must be some wrong information over there. अच्छा, where to learn the pH values, Halima? हसन ए होगा, सही है सर। दिशा डी नहीं होगा। देखिए ये पीएच वैल्यूज अगर आप गो थ्रू करेंगे पीरियड 2, ग्रुप 2, पीरियड 3 और पीरियड 17 के नोट्स, तो उनमें उन रिएक्शंस के साथ स्पेसिफिकली पीएच वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, और ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हुए हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे पास वो नोट्स यहाँ, अगर आप ग्रुप 2 का वो या और पीरियड 3 के रिएक्शंस खोल के देख लें तो वहां पे पीएच वैल्यू साथ गिवन है। नोट्स चेक कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर है। The element in the period 3 and their compound showed trend across the period from sodium to chlorine. Which row is correct? Okay.
When we move across the period, what happens to the electronegativity? It decreases or increases? Across the period, electronegativity increases. And if electronegativity increases, I can easily mark or wrong A and B or exclude A and B. ये बात यहाँ तक clear है सबको? Okay. Now the behavior. Here they are saying acidic. Do our metal compounds are highly acidic or normally acidic? No. So D goes wrong. Is amphoteric, then silicon oxide, phosphorus oxide, and sulfur oxides. These are acidic. This one is amphoteric, and these two are basic. Is it understandable? Very good, Tisha. C option is correct. जी यहाँ तक किसी को कोई confusion है तो please पूछ लें. Question number 19. The table shows the melting point of SiO2 and P4O6. Let me recall you guys, if we talk about P4O6, its melting point is very low because it's a simple molecule. And silicon 4 oxide SiO2 is a giant molecular. I think there is a one question about this in the previous paper as well. Okay, let me see. Which statement explains the difference between the melting point of SiO2 and P4O6? So it's simple. I can easily read this thing. Here it is written. So it means our D option goes correct and A, B and C are wrong. ये clear है सबको? Question number 20. Equal masses of calcium carbonate, calcium nitrate, barium carbonate, and barium nitrate are thermally decomposed. The volume of gas produced in each experiment is measured under same condition. Which compound will produce the greatest volume of the gas? अच्छा, इस क्वेश्चन को किस तरह करना चाहिए ये कौन बताएगा? जी, how do you think you will do this question? Yes, very good, Iman. It won't be carbonates. Why? Because when we decompose carbonates, we get one gas only, carbon dioxide. And when we get bilkul Tisha, sahi hai. And when we decompose nitrates, we will get a nitrogen and oxygen. So obviously, in case of a nitrates, we will get a higher, uh, larger volume rather than carbonates. ये बात सबको समझ में आ रही है? So I can easily mark A and C wrong. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? मैं यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देता हूँ क्योंकि जब मैं मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करूंगा तो व्हाट वी विल गेट मेटल ऑक्साइड एंड CO2. बट जब मैं मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज करूंगा तो आई विल गेट मेटल ऑक्साइड प्लस 2 moles ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाफ मोल ऑफ oxygen. So in this case I will be getting a greater volume. But barium metal is a more reactive, Iman, not barium, the compound of a barium. Okay, so what they have given you the information, you will use equal masses. And let me recall you, if you will look at the AR of calcium, it's 40, and if you will take a AR of barium, what it will be?
Let's have a look over here. It's 137.3. The rest of the mass remains same, that is 48. One carbon and three oxygen, sorry. One carbon and three oxygen is 60. So 137.3. Okay, that was of carbonate. Okay. So if we use the equal mole, oh sorry, if we use the equal mass of calcium nitrate and barium nitrate, then which substance have a, which compound have a greater moles, calcium nitrate or barium nitrate? I am repeating my question again. Listen it carefully and then answer it. If I use the same mass of calcium nitrate and the same mass of barium nitrate, then which compound have a greater moles? Either calcium carbonate or calcium nitrate and barium nitrate. Yes, good Hamna. No, calcium nitrate have a greater mass, sorry, greater moles. I'm repeating calcium because its MR is lower. So the formula of mass is M over MR. So the if we have a equal masses, yes, तो कैल्शियम नाइट्रेट का डिनोमिनेटर में एमआर की वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी, तो इसके मोल्स बढ़ जाएंगे. तो अगर इसके मोल्स बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है ये ज्यादा मोल्स गैस के प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा मोल्स गैस के प्रोड्यूस करेगा तो इसका वॉल्यूम इस केस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो डी रॉन्ग हो जाएगा और बी करेक्ट आंसर है. तरीका समझ में आया सबको? Okay, great. Now question number 21. Which rock gives correct comparison between the solubilities of calcium hydroxide, barium hydroxide, and thermal stabilities of calcium carbonate and barium carbonate? Okay. If we talk about the solubility, we have to look at the position of these elements in the periodic table. The first one is beryllium, then magnesium, then calcium, then strontium, and then barium. So barium hydroxide is more soluble, right? And here they have written lower solubility. So A and B goes wrong. ये बात clear है सबको? And down the group thermal stability increases. So here they says that calcium is more thermally stable than barium, which makes C wrong as well. So we were left with the D option only. So D is our correct answer. जी ये point भी clear है सबको? Okay. Question number 22. Which statement relating to the elements in group 17 and their compounds is correct? Bromine will reduce Ki to form iodine. Okay, ये question कर लेते हैं हसन इसके बाद. So if we talk about bromine, bromine will react with Ki and form KBr and I2. But conversion of iodide to iodine is reduction or oxidation? It's oxidation. Why? Because iodine here it have a -1 charge and here it have a 0 charge. So if it's oxidation, so A goes wrong. Iodide ion reacts to form white precipitate when added to silver nitrate. Completely wrong, because iodide ion forms yellow precipitate with a silver nitrate solution. Bromide ions react to form a white precipitate when added to a silver nitrate. Again, completely wrong. Bromide ions will form a cream precipitate with a silver nitrate solution. So we are left with only D option. So our D option is correct. जी यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay. So we will be keeping our class over here, and tomorrow we will continue from here, and inshallah tomorrow 11 o'clock. Okay. Okay. Take care, everyone. Allah Hafiz.